Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third episode of Study Abroad. Today we have as a speaker is Wahad Siddiqui, who's a computer science student at University Putra, Malaysia, which is ranked second in Malaysia with interest in blockchain, financial technology, venture capital, and theories of computer science with financial markets. Wahad was not only selected for summer school at Peking University, but is also currently working to fund his OPEX, in which he trades global CFDs indices such as Nasdaq, DJ30, GR30, OS 200, and gold. And second, we also have a speaker named Dr. Waqas Hanafi, sorry if I'm pronouncing it wrong, is a medical doctor from Canada. He's doing his master's from public health from the Department of Social and Preventive Medicine at the University of Malaya, which is ranked first in Malaysia and 59th in the world, and is currently involved with cutting-edge AI-powered COVID-19 research and on tuberculosis and metabolic syndrome. Yes, Wahaj and Dr. Hanafi, you may start. So Atik has already given a brief introduction of ours. So I think we should start with the topic of the presentation, which is education in Malaysia. Yeah. So why we choose to study in Malaysia? So Mr. Waqas, would you like to share your experience first as a Canadian student in Malaysia? Yeah, first of all, thank you for the invitation to speak with you all. I had a criteria which I'm sure is probably similar to the criteria that you may have when selecting a master's program or a destination, a country to study abroad at. So for me, the criteria was not always just about a place that is cheap, although I would say Malaysia offers a very good value. So I'm sure you can find, if you just want the absolute cheapest, I'm sure you can get cheaper in other countries, but I think Malaysia offers the best value. So so we're looking at state-of-the-art campuses. From what I've seen, well-educated professors in a modern country, fairly developed, and where we are, me and Wahaj, is Kuala Lumpur, which is a truly international city. Everybody speaks English here, so it wouldn't be the same sort of culture shock or learning curve for international students to come here. Everybody just speaks English, so it makes life much easier. Also, there's a lot of local industry, so perhaps after you finish your master's, maybe there could be opportunities locally. And lastly, I do want to say the universities here, most of them are recognized not just regionally, but worldwide. The university that I'm in, University of Malaya, it has been ranked in the top 100, and I think currently it's 59 in the world, and it is going up every year. So, so it's definitely something to look into. Yeah. So all right. So why I choose Malaysia? As a Pakistani student, like I wanted to get an international exposure, so that's why I choose to apply to Malaysia. And like after I completed my O levels in 2017. After that, like I was thinking, where should I apply? Obviously, I checked the ranking of the universities in Malaysia, and the Malaysia is home to the top 500 or top 200 universities in the world, and the top public universities are, like I will show you. Malaysia top five countries are like top five universities are like University of Malaya, which is ranked at 59, University of Putra, Malaysia, which is ranked at 152, University of UKM, which is ranked at 141.
तो मलेशिया की इतनी अच्छी रैंकिंग थी सारी यूनिवर्सिटीज की, तो मैंने सोचा कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो है ना मैं यहाँ से लूंगा। और भी बाकी यूनिवर्सिटी क्या नाम है मलेशिया के काफी फैक्टर्स थे जो मैंने चूज किया, क्या नाम है मलेशिया। सही। अब बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या नाम है मलेशिया अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका वीज़ा प्रोसीजर क्या होता है। मतलब पहले जो आपने अप्लाई करना है तो आपने ये टॉप यूनिवर्सिटीज देखनी है मलेशिया की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया हो गया, और ये जो 5 यूनिवर्सिटी इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो बाकी और है कि यूनिवर्सिटी क्या नाम है मलेशिया में यूके की भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग जो कि लंदन की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम जो कि क्या नाम है यूके की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। अब इनका ये सीन है कि ये जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये अगर इनके आप यूके की ब्रांच में जाते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, और अगर मलेशिया की ब्रांच जाते हैं तो काफ़ी वो सस्ती पड़ती है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि मलेशिया ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे काफ़ी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको आप देख सकते हैं और जिनमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आती है कार्टिन यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम जो कि यूके की है, यूनिवर्सिटी ऑफ सबलाइन जो कि क्या नाम है ये भी यूके की यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ नेस्कल जो कि यूनिवर्सिटी क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया की है। और क्या नाम है नेदरलैंड की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप देख सकते हैं जैसे। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट की, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मलेशिया के लिए। पहले तो आपको अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी ए लेवल्स और ओ लेवल्स की ट्रांसक्रिप्ट देनी हो। दूसरा ये है कि आपको वही अपनी बैचलर की डिग्री लेनी होगी जो कि क्या नाम है आपकी मास्टर्स के एप्लीकेशन के लिए काम आएगी, जिसके अंदर क्या नाम है वो आपकी अपनी डिग्री को क्या नाम है उससे अपना HSC से भी अटैच कराना पड़ेगा, सारी ट्रांसक्रिप्ट करनी पड़ेगी, लेके उस तरह अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के लिए, मास्टर्स के लिए। और इंग्लिश प्रोफेसी में चाहिए होगा, इसके ना आइल्स के लिए आपको कम से कम आईएलटीएस के अंदर आपको कम से कम 6 स्कोर होनी चाहिए, और टॉफिल के शायद 800। और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए जिनकी जीपीए 2.75 से कम है, और क्या नाम है 2.78 से 2.57 से कम है, तो उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होता है। जो 3 से ऊपर की जीपीए होती है या फिर 2.57 से ऊपर की जीपीए होती है उनका थोड़ा चाहिए होता। अब जो आपने एक दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटी में ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे इन सब की अगर आपने कर दिए, फिर इसके बाद आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। एक दफ़ा आपको एप्लीकेशन आपने दे दिए यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। जो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो एक स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा वीज़ा के लिए। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा जो कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो देंगे। साथ में पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देनी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है आपको, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देनी है। और बाकी प्रूफ और फंडिंग और एक्सपेंस उसी में आ जाता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो सब आपको देनी है। और बाकी हेल्थ केयर सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे आके बनवा सकते हैं। और वही जैसे मैंने पहले बताया था मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है 2.75, और क्या नाम है बैचलर डिग्री आपकी बैचलर डिग्री में कम से कम इतनी आनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। वही है जो वीज़ा प्रोसेस जो होता है मलेशिया का वो बेसिकली पूरा पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन होता है। तो हमें इस वेबसाइट पे जाना होता है एजुकेशन मलेशिया की। एक दफ़ा आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप ये करेंगे कि आप जो है ना एजुकेशन मलेशिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल का जो होता है स्टेटस आना तो 1 वीक से ये बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन जो इसका जो प्रॉपर जो टाइम लगता है वो 1 महीने का होता है।
और 1 महीना लगता है पूरा प्रोसेस होने में। आपको जितने भी पहले डॉक्यूमेंट बताए थे वो उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जमा कराने होंगे वेबसाइट पे, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके लिए 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद ये होगा कि आपके पास वीजा अप्रूवल आ जाएगा। अब आगे ये करना है कि एक दफा आपके पास वीजा अप्रूवल आ गया है, उसके बाद आप ये कर रहे हैं, उसके लिए उसके बाद हमें सिंगल एंट्री वीजा चाहिए होता है। तो सिंगल एंट्री वीजा के लिए ये होता है कि जो है ना, एम्बेसी लेके जाते हैं अपना वीजा अप्रूवल लेटर। उसके बाद जो है ना, वो हमें क्या नाम है, वो वीजा अप्रूवल लेटर लेके जाते हैं, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट ले जानी होती है हमें, और क्या नाम है, फोटोग्राफ ले जानी होती है। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स का टाइम लगता है। और जो है ना, ये अपने जो एम्बेसी वाले होते हैं वो वीज़ा स्टिकर लगा के दे देते हैं आपके पासपोर्ट पे सॉरी। जो पोस्ट अराइवल होता है वो आपको ये होता है, एक दफ़ा आपका वीज़ा का काम हो गया, अब आप मलेशिया में एंटर हो गए, तो आपको अपना पासपोर्ट यूनिवर्सिटी में जमा कराना होता है। तो इसका ये प्रोसीजर होता है कि जो है ना, आपको अपना पासपोर्ट वगैरह सब यूनिवर्सिटी में जमा कराते हैं, और फिर वो आगे आपका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। बाकी अकोमोडेशन यहाँ पे काफ़ी सस्ती है। आप जब पहले अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखनी हो अकोमोडेशन, तो आप देख सकते हैं कि iproperty.com.my पे, और ये दो वेबसाइट है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस अकोमोडेशन देख सकते हैं। बाकी एक स्पीड होम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मलेशिया के लिए। और यहाँ पे टेम्परी भी काफ़ी मिल जाती हैं, जैसे अकोमोडेशन वगैरह, जैसे एयरबीएनबी, booking.com। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे इतना पड़ता है, जैसे कि 1100 रिंगिट, जैसे कि एवरेज बंदे का होगा, एक स्टूडेंट का जो खर्चा होता है, मतलब 3 वक्त के मील निकल रहे हैं उसके अंदर, और जो है ना, ये अपना पूरा महीने का खर्चा आराम से निकल रहा है, मतलब इसके अंदर आराम से रह सकता है। और बाकी ये होता है कि जो आपको जो यूनिवर्सिटी की बैंक स्टेटमेंट जो वीज़ा के लिए दिखानी होती है, उसके अंदर आपके इतने पैसे होने चाहिए जितने में आप, जैसे कि यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है ना जितनी, उतने आपकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए मलेशिया की वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जैसे जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ और डॉक्टर वकास पढ़ रहे हैं, उसकी फीस होती है तकरीबन $500 तक। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है उनकी फीस होती है $10,000 तक। ओ सॉरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वही आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश आ जाती है, और जो बाकी मलेशिया की यूनिवर्सिटीज हैं वो आ जाती हैं। बाकी अकोमोडेशन आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी दे सकते हैं और उसके बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी वो फिर उसका अलग प्रोसीजर होता है। ज़्यादातर जैसे मैंने जो किया है वो मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर ही लिए। तो अब अगर आप अकोमोडेशन शेयर रूम में ले रहे हैं या फिर डॉम में ले रहे हैं, तो वो आपको पड़ जाएगी तकरीबन 300 रिंगिट की। और अगर उससे थोड़ा सा बड़ा रूम ले रहे हैं तो वही 500 रिंगिट का पड़ जाएगा। स्टूडियो ले रहे हो आपको 1000 तक का पड़ जाएगा। फाइंडिंग जॉब, तो क्या नाम है, जॉब की अगर यहाँ पे जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट होती हैं, जैसे ग्लास डोर और गूगल जॉब, इस तरह की आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगी। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ 20 आवर जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अच्छी बात है ना, जैसे मुझे जो लगी है वो ये कि यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट है। वो इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं सबको प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और सब लोग मुझे काफ़ी इज्जत करते हैं। तो इस वजह से मैं बोलूँगा यहाँ पे रेसिज्म नहीं है जब आप जॉब फाइंड करने जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। और जो लास्ट आपका सेमेस्टर होगा उसके ना आपके मेंटोर आपको गाइड करेंगे कि क्या नाम है, कैसे अप्लाई करना है जॉब्स वगैरह में। और ये टॉप यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके मेंटोर्स भी हेल्प करते हैं, वहाँ पे जॉब्स भी काफ़ी होती हैं। तो आप लोग जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, जो जैसे पहले लिस्ट में थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया है, UKM है, और बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया की। अच्छा, जब आप मलेशिया में एज अ स्टूडेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो आप काफ़ी और जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं हो।
जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना इंग्लिश टीचर भी आराम से बन सकते हैं, लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं, लैपटॉप रिपेयर इस तरह की। और वो ये यहाँ पे जो एवरेज इनकम होती है वो 4000 रिंगिट होती है, और 4000 रिंगिट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर सही से आराम से निकल जाता है खर्चा। थैंक यू ये तो वहाज, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें, इंट्रोडक्शन थोड़ा मिस हो गया कि आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे जाने का, कैसे एडजस्ट किया उस एनवायरनमेंट के अंदर, और आप आजकल क्या काम कर रहे हैं? right. असल में during the presentation there was a issue. I have anxiety problem, so that's why I think I miss it out. So बिल्कुल बिल्कुल, आराम से शुरू करें, वी ऑल आर हियर रेडी टू लिसन टू यू। all right. So like I'm just a computer science student at University Putra, Malaysia. I like for my for my funding I'm a stock like मैं अपनी फंडिंग के लिए जो है ना वो करता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, और वेंचर कैपिटल का भी इंटरेस्ट है काफ़ी मुझे। और बाकी जो है ना मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेटिट्यूड क्राइडन लिमिटेड यूके उसके लिए काम करता हूँ। और उसके बाद आपने ये भी बताया था कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भी हैं और यूके की यूनिवर्सिटीज भी हैं। इनका डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या मास्टर्स वालों के लिए भी होता है, और इज इट ओनली फॉर द बैचलर्स? सॉरी, हाँ वो सिर्फ वो बैचलर्स वालों के लिए होता है, सॉरी। और बाकी आप अपनी स्लाइड में वो बता दें कि मतलब एक पाकिस्तानी का वहां पे जाना कैसे एक्सपीरियंस होता है और कैसे जाके वो एडजस्ट होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर। पाकिस्तानी का इधर इतना इशू नहीं है, मतलब आराम से हो जाता है इधर। कुछ ऐसे इधर असल में हर कोई इंग्लिश समझता है, आराम से आपकी बात हो जाती है सबसे, तो ये है कि सब सही रहता है। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट मलेशिया इज दैट टेक जायंट्स सारे जो हैं वो, मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने टेक जायंट्स ने अपना हेडक्वार्टर्स खोला हुआ है, एंड दैट इज इन मलेशिया। लाइक द कंपनीज यू हैव शोड के गूगल भी है उधर, आईबीएम भी है। कैन यू टेल अस अबाउट मोर अबाउट दैट? इधर जैसे हाँ इधर गूगल भी, आईबीएम भी है, और काफ़ी हैं जिसके अंदर काफ़ी मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज से हो और आपके पास स्किल्स हो प्रॉपर। जैसे कि क्या नाम है, अगर आप डेटा साइंस के हैं, आपको आती हो सारी पाइथन वाइथन डेटा साइंस की जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है आपको मिल जाएगी आराम से। जब आईबीएम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटेल में भी, डेल में भी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दें, और बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा और अभी कितना साल रह गया आपकी पढ़ाई को, और कैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। Okay, so my experience. Let me talk about my experience a little bit um, about applying first of all. So, if you're applying for a master's program, I'm guessing you're applying to different countries, different universities. So I applied to several universities in several countries. I found that most master's programs in other countries have a lot of requirements, especially in terms of writing essays, making presentations. Some of them will require face-to-face meetings, even interviews, I mean. So my experience with Malaysia is that the admission process was really streamlined. Not much hassle. So I sent in an application online, and then I got an email accepting me. So it was completely based on the paperwork that I sent them, which was a transcript, my degree, which all of it electronically. And I think there was no essay or motivation letter or reference letter or anything like that. So only when I came here I found out that the reason is that many of the Malaysian universities are trying to gain more international students, which would be a great thing for you guys.
Why is that? Well, if a university has a lot of international students, especially for their master's or PhD programs, it makes them look really good in terms of ranking and also like the prestige that they have. So if you're looking into applying for universities, you may have good luck in going for the Malaysian public universities that are trying to forge a name for themselves. So that's for applying for the universities. As for life in Malaysia, like I said before, you can easily adapt to life here. If you've never left your country, I think you wouldn't really feel in terms of communication. Everyone speaks English. Food, you can get all types of food here. It's a metropolitan city. And also distances, you're not too far from your country if you go to Malaysia, as opposed to if you go further away, like Europe or North America, for example. What else can I talk about? Anyone has any questions, perhaps? Answer more specifically. Yeah, so my question is that, like you said, the procedure was very easy. So how was it like to be the first day? How was your first day when you went to Malaysia and you had to start your studies in the university? You have to prepare for all the work, buy books. How was that experience? Yeah, so there's a lot of international students, so the government has done a good job in creating like a step-by-step procedure that you have to follow for the visa and so on. And on that website, they do have tips and stuff on how to adapt to life here. But to be honest, you should not expect a lot of difficulty. What you need here basically is to follow the procedure to get the visa. If you miss some of the steps and the visa becomes a problem, that could be an issue. So you have to follow those steps correctly. So I did that when I first came here. The other thing was registering for classes. So that was also all online, but then I had to go in also for registration. You cannot miss those dates. So it's important to make sure that you have a step-by-step, like a list of steps that you have to do after you come here for the registration and the visa. That's the most important thing. Other than that, place to live, you need that. I'd highly recommend you get that before arriving. Although for me, what I did was I came here first and I stayed in a sort of long-term hotel for a month because I wanted to actually take a look at the place before agreeing for it. But I suggest that you start looking before you come, and then shortlist a few places, and then when you arrive, you just have to go and take a look, and then select the place that you want to live at. If you can get a dormitory from your university, then that's one less thing to worry about. What else can I talk about? Transportation. We're in Kuala Lumpur, which has one of the best transit systems that I've seen. So there's LRT, there's buses everywhere. We have what do you call it? The e-hailing, Grab. So we just use that. What else? I live about 2 kilometers away from my campus, so I could just walk if I wanted to. So that's not an issue in that sense. So we have first question from Wasim Ahmed, and that is, do you get PR after masters? From what I know, not really. I don't think so. But I did see that in the news they were planning on giving visas, student visas that are longer than the required stay. So for example, if your master's is 2 years, they were talking about giving visas that were maybe 3 years or so. So maybe Wahaj knows more about that, since I never came with the intention of
staying here? यहाँ पे ये होता है पीआर के लिए तो आपको कम से कम 8 साल गुजारने पड़ते हैं और साथ में शायद यहाँ पे शादी वादी भी करनी पड़ती है तो फिर मिलती है। Wasim Ahmed wants to open the mic. Yes, you can open. Wasim, you can ask. Yeah. Yes, Wasim, you can ask some questions. Okay, so my basic question is to Mr. Waqas that have you applied from within Pakistan or elsewhere? And I think they said something about your into having a Canadian background. So has that had an impact on your admission to the university, or is it like any other Pakistani that's applying to it? Okay. Well, I didn't. I don't hold the Pakistani nationality, so I didn't apply from there. I applied online. So it was just online, and you could apply from anywhere. Actually, I'm guessing the process would be the same. Oh, okay, so that's a shorter process for you rather than a person applying from within Pakistan, right? I'm not sure exactly what the process would be if you apply from Pakistan, but if I'm not mistaken, I think it would be the same for everybody. So you mean to say the process for the visa, or you mean the process for the university? So, Mr. Wasim, I think the process for the visa is same for all the citizens. I guess the point is clear. We have one question from Ali Khan, and that is, what about the scholarships? How do we apply for scholarships? स्कॉलरशिप यहाँ पे ऐसा होता है कि उन्हीं को मिलती है जिनकी जीपीए 3.5 से ऊपर हो। और मेरी क्या नाम है वो ये कि मतलब काफ़ी मुश्किल होता है स्कॉलरशिप लेना भी, ज़्यादातर सिर्फ लोकल स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मतलब हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनमें इतना नहीं है, मतलब कि स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश हो गई, उनके लिए अलग होती है स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल्स के लिए होती है। और उसके लिए भी आपके ग्रेड्स हाई होने चाहिए, मतलब आपके पास ए लेवल्स में 4 स्टार होने चाहिए और आपकी जीपीए 3.5 ऊपर होनी चाहिए। We have one question from Ashad, that is कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ओवर कैसी होती है, मतलब टीचर्स कैसे बिहेव करते हैं आपसे और कैसा पढ़ाते हैं, हाउ द एनवायरनमेंट है? Maybe I can talk about that a little bit. So the teacher-student relationship, it really depends on the teacher. So I'll tell you, so I'm doing a master's in public health here. There are some older teachers that do more of a sort of a lecture where it's not very interactive. So it's more old-fashioned. I'm sure you can relate. It's where the professor comes in, starts the PowerPoints, and then talks for 2 hours and then leaves. But most of the, I would say, younger professors, younger than age 50, are quite interactive. So most of the classes are not really like lectures, they're more like discussions. So very interactive. So I did like that. So other than that, the teachers are quite open to, and now with COVID, I've had a lot of meetings over Zoom and stuff with my professors, and they're always open for emails and even WhatsApp. So that's never been an issue for the teacher-student relationship. We have HEC. Would it be from Islamabad? Like if someone want to go to masters and come back to Pakistan, will it be recognized by the HEC? Your mic is off. Yes, you're mute. Yeah. बेसिकली ये होता है कि जितनी भी बाहर की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी अगर आपके पास डिग्री है तो आपको एचईसी से है ना वेरीफाई करानी पड़ेगी।
वो ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। Okay, everyone is free to ask questions. Tell Pratik, if I may. yes. Yeah, start. Okay. Yeah. So my question is from both Wahaj and Wakas. Okay, yaar, is there any particular reason you chose Malaysia over other countries for masters? Okay. For my case is quite unique. It's because I was specifically interested in doing research in a tropical country. So that narrowed it down to a few choices for me. So it would have been, most of the, I guess some of the countries in Asia, Southeast Asia, that were attractive. And Malaysia, where I live. We lost your voice in the middle. Can you please just, say it again? Oh, sorry. Yeah. Malaysia value. So the cost of living is quite affordable here. But at the same time, and also the university fees I thought were quite fair. Is the one that I'm studying at. So I thought the value was really good for studying in a city that is really metropolitan, really developed, very safe. So it was like a win-win scenario. Had I studied, for example, in Canada, even though I would have paid domestic student fees, the cost of living over the 2 years would have ended up costing me a lot more. Can you tell us about the cities of Malaysia? Like, कौन सी city में जाना चाहिए? What is the best recommended city you want us to go? Okay. Yeah, Malaysia uniquely has a very big major city, which is Kuala Lumpur. Everything is in Kuala Lumpur. There's hundreds of institutes, universities. All the major universities are actually here. So I would highly recommend that you pick Kuala Lumpur. But of course, there's other cities around. There's Penang. Penang is like a mini version of Kuala Lumpur. Has all the conveniences of KL, and just as developed. But if I'm not mistaken, I think all the major universities are in Kuala Lumpur. That's where you want to be. But KL is a small country. It's easy to travel back and forth, especially as a student later when you live here. If you're doing a master's that requires travel for research or projects, for example, then it's quite easy to travel around anyways. It's a very well-connected country, and you can go anywhere with cheap flights or buses or trains. My next question is, what are the career prospects? Like, I got my bachelor's from Pakistan, and then I moved to Malaysia. I got my master's. What are the career opportunities a person gets when he has a master's degree from Malaysia? Does he have to work in the Malaysia, or does he get other opportunities in other places of the world? Okay, I think that would depend on which discipline you pick, and then if you have goals to do a PhD later. So I think once you've done a PhD, it really opens the doors into academics and research globally. But with a master's, it really depends on which discipline that you do the master's in. So generally, Malaysia is quite recognized. Master's degrees from Malaysia are quite recognized in Asia, especially the region and the world. You can get jobs in nearby Singapore. So they would recognize most master's degrees in most disciplines, I mean. And as for working locally, if you graduate from a top Malaysian university, you have much better chances of finding work in Malaysia.
So it would be much better to show that you've graduated from Malaysian university at the time of interview, which you can do in person in a career fair, for example, rather than sending in a CV by email from, a foreign university that they're not familiar with. So the prospects are much better in Malaysia, but globally too, I think it's fair to say it would open up doors. Like as you mentioned in the slide that there are international universities as well, like Australian universities in Malaysia and UK-based universities in Malaysia. So is the work the same as the UK universities you have mentioned and the Australian universities you have mentioned? Or does the person who has this type of degrees where it is accredited by Australia and UK, does he or she get the chance to go to that country? Like if someone in Monash University is Australia and there is Nottingham, that is a UK-based university, do that person get the opportunity to work at that city? Or like if I have the degree from Malaysia, do I have to, will I have the opportunity to go UK because of the degree, or does it have the same worth that UK degree has? I think the thing to look at is the university rankings, the QS rankings. So there are some institutes that use they have a collaboration or an English sounding name or something like that. But don't forget to look at the university rankings. So employers looking for fresh grads, they are also looking at the university rankings. So for example, you could graduate from Monash, but then the employers would probably pick students graduating from University of Malaya just because the ranking is so different, so much higher. As for working back where, for example, like Monash, getting a job in Australia, is it easier? I'm not sure how familiar they are with universities that have collaborated with Australian universities, but that's something to check out on individual websites. Maybe they do have benefits in their collaborating countries. We have one more question, and that is, how convenient is it for females to study in Malaysia? Alas, we don't have females here, just two guys, huh? So, but I can probably answer that. Malaysia, even though it's known as like a Islamic majority country, and there are people who are conservative here, but you have to remember that it's a very diverse country. So there's a lot of not everybody is the same race, and not everybody is the same religion, and those are just the locals, the Malaysians. As for internationals, there's thousands of international students and foreign workers here. So generally, racism or sexism doesn't really exist here. It's definitely not as bad as other places that are maybe not too used to dealing with different types of people. As for how convenient it is for females, if you could be more specific about this, maybe I can answer more clearly. But I think females don't really experience harassment or issues like that in Malaysia. We have one question from Ashad, and that is, what will be the average fee per year? He's not specific, but I guess he wants a rough estimate. So I think Wahaj can help us with that. The fees of local university is very low. For example, public university fees are very low, and the fees of international foreign universities such as Monash, Nottingham, and all the UK's university in Malaysia, the fees is very expensive. For example, my fees is like only $2,000 per annual,
and the fees of Monash and Nottingham University is like at above $10,000. So this is how much the difference is. Next question is, how was the life before COVID? And that is the question for both of you. How do you experience this COVID life in Malaysia? Yeah, go ahead, Wahaj. You had a social life, right? I think like it was same as like Pakistan would have. Like, have you faced anything different? Like, you have to attend lectures online where you have to go to the campus before COVID. But how was the COVID situation in Malaysia? Was it like Pakistan, or does it have very less cases? I think Waqas should answer this question because he is from public health. Well, I think asking about social life, I think they mean more about life outside of campus, right? So, Exactly. yeah. So outside of campus, I mean, first of all, when I came here, I didn't have that many friends. So my aim was to make some friends. And the people I interacted with at first were other students. Unfortunately, in the public health program in masters, most of the students were really, I don't know, much older. They were all already doctors, specialists. So they all have families and kids. So it was difficult for me to make friends with those people. But of course, if you are, it depends on the discipline again. So if you're doing a public health master's here, you cannot expect to make a lot of friends to hang out with. But outside of campus, yeah, I mean, KL, I feel sometimes it is like a student town. There's a lot of universities here, so you will come across people, you will meet people. If you live in a building, apartment building with a lot of students, I'm sure you're gonna come across a lot of people. And the way it works is the same way anywhere. You make friends through other friends. So in the beginning, it's gonna be tough, but once you make a few friends, yeah, your network is gonna grow. So this is a question from both of you guys. Coming from Canada and coming from Pakistan, what is something you miss in Malaysia, and what is something you like about here as compared to your previous accommodations? Okay, I would love to say I don't miss the weather. I don't miss snow because in Canada I would have to shovel snow off my car. I would have to drive through icy roads, so I don't miss that at all. And I love to take selfies in December of the beautiful weather here, of palm trees, and send it to my family and make them jealous. So, but what I do miss about Canada, I guess, you end up missing the people more than the place. So, that's something to live with, especially if you want to study overseas. So if that's something you're looking into, yeah, you will get homesick, but you're probably going to end up missing the people more than the place. So what I miss is I miss Pakistani food a lot. Anything you love about Malaysia that was not in Pakistan? Waj. I think like in Pakistan we don't have much student activities. In Malaysia, like there are a lot of all like too much to do here for students. Like we can go for hiking, trekking, and sometimes for camping. Like in Pakistan, there was not much social activities. I think that yeah. So We have listened this a lot in the newspapers as well in the headlines about Cyberjaya, and they say that it's the new Asian Silicon Valley. What do you think about Cyberjaya? Can you explain that?
Okay, well, I can just talk a little bit. So, as you know, KL used to be the capital city, and then they followed the model of countries like Pakistan, where they created a new capital city. It's called Putrajaya. So, going by that example, they noticed there's a uptake in a lot of tech industries in Malaysia, and then they said, okay, let's create a city that's like the capital for all the IT and all the finance, IT, other sort of tech industries. But what I've seen, what has ended up happening is that there's like a half the IT industry, the headquarters offices are in KL, and then in Cyberjaya there's a lot of like startup and medium-sized companies that have opened up there. So Cyberjaya is basically a suburb of KL where office space is cheaper. It's perfect for startups, and it's quite clean, I guess. Wide roads, clean, modern. So that's what I know about it. I would like to thank both of the speakers, Vahaj and Dr. Waqas Hanafi, for being here. We're really happy and we're very honored to host you today. If there is any question, anyone, if you're really willing to ask, we're gonna take 2 minutes more. Write your questions in the chat box, and we'll then wrap up the event. If anyone is willing to open the mic, you can also open the mic. Yeah. There was a question that came to my mind. Hostels वगैरह का क्या सीन है वहाँ पे? मतलब if people want to live together, do shared rooms come cheaper, or is it good enough we can live in a personal apartment, studio apartment or something? हम दोनों ही जो है ना ऑफ कैंपस रह रहे हैं, हम लोगों ने अपने दोनों ने अलग अलग स्टूडियो अपार्टमेंट लिए हुए हैं. अच्छा, कैंपस का ये सीन है, कैंपस में है ना बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं. जैसे कि आपको जो है ना मतलब पहले से देखना पड़ेगा, मतलब कि एक सेमेस्टर पहले से आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन लेनी है. तो मेरी यूनिवर्सिटी का तो ये सीन था. और बाकी ये शेयर्ड में जो होते हैं, जैसे कि अगर आप एक 3 कमरे का शेयर में ले रहे हैं तो कम से कम आपको है ना वो 300 रिंगिट तक का एक रूम पड़ जाएगा. और बाकी क्या है ना, वकास आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्या है ये सीन है? Yeah. So Sorry, I Akash, had the you mic made off. it. Yep. Yeah. Before I came here, I did look into the on-campus residences, and just by Googling, I found that they were a bit expensive for what you're getting. So I thought that I could come here and then get something that is much more comfortable, not too far from campus, and also okay priced. So I ended up choosing to get room for rent. It costs about 1,000 ringgit per month, which is about $300 per month. And I thought that's not bad. You get your own room with your own private bathroom, a little kitchenette. You get the privacy. I have friends who are sharing rooms, and one of them is paying as little as 250 ringgit per month. So you have the choices available. Of course, if you have the money, there's even there's much nicer apartments available if that's what you want. So, but the range is there. If the choices are available. We have this question that asked Dr. Waqas about this AI project he's doing in the health sector. Can you tell us about that more? Since we all are here computer science students, we are very curious to know. Interesting. That's good. Yeah. So all computer science students, great. So, as you know, detecting COVID has
has been a race almost. We're using rapid testing, PCRs and stuff, but also now we're starting to look at other ways of detecting COVID, and one of the ways that is using the sound of the cough. So we can actually create a AI machine learning model where we train using cough samples. This AI to basically be able to detect to a fairly good sensitivity whether a person is likely to have COVID or not, because the theory is that the type of cough you have from a regular flu or pneumonia or something like that is different than the cough from a patient who has COVID. So I'm involved a little bit in doing the research paper for that. We're gonna take last two questions. This question is from Kumail, and it is: do you plan on getting PR or coming back to Pakistan? And it's for both of you. Okay. I know it's a bit of a personal question, but it's like yeah. Well, if I go to Pakistan, I'm gonna need a tourist visa. So, but I don't plan on getting a PR here. I plan to continue a PhD program after this, probably back in Canada, and then probably end up working there. We have one question. Tell us about the hostels for females in Malaysia. Can you tell us about that? If a female from Pakistan goes into Malaysia, will it be easy for her, or will it be hard for her, or do you recommend a female going for a master's in Malaysia? Any one of you willing to answer? Oh, go ahead, Wahaj. I've hogged the mic too long. I think इसके ऊपर you can look for like आप इसके ऊपर गूगल पे वीडियो देख सकते हो, काफी लोगों ने लगाई हुई है कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए काफी सेफ है मलेशिया. लाइक मलेशिया इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो यही है कि अगर किसी लड़की को आना है करने के लिए तो काफी अच्छा होगा उसके लिए. काफी सेफ कंट्री है, यहाँ की लॉ काफी स्ट्रांग है, लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ है. यहाँ पे मतलब कि ज्यादा क्राइम रेट भी सबसे कम है, शायद दुनिया की कुछ टॉप सिटीज में आती है ये जिसके क्राइम रेट बहुत कम है. We have one question from Wasim Ahmed, and that is, what is exposure regarding augmented reality and IBM Watson? Do the education focus on that? I think that's a computer science specific question. If Wahaj can answer that, कि augmented reality और IBM Watson पे कोई काम हो रहा है वहाँ पे? ये मेरी थोड़ा फील्ड से अलग है. Yeah, I guess that's a bit of off topic too. We are taking last question from Ali Khan, and that is, can we buy property over there on student visa? I think we can buy the property there also. लेकिन उसके लिए है ना स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे वो कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना मोर देन लाइक आप $100,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की प्राइस हो तो आप ले सकते हैं. जैसे मैं एज अ स्टूडेंट मलेशिया में स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ. मैं मलेशिया की जो लोकल मार्केट है उसके भी स्टॉक लेता हूँ और बेचता हूँ. वहाँ पे भी मैंने ट्रेडिंग का अकाउंट खोला. तो क्या नाम है, मलेशिया में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता. यहाँ पे स्टूडेंट भी सब ऐसे काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, बॉन्ड्स भी शायद ले सकते हैं यहाँ पे. इससे एक क्वेश्चन मेरा पैदा होता है इससे कि व्हाट इज द टैक्स इन ओवर देयर. मतलब फॉर एग्जांपल स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, बट टैक्सेस ऑफ कोर्स वगैरह एज कंपेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे ज्यादा ही बेहतर निज़ाम होगा. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मतलब आप जो उसके बारे में बात करें, जैसे जो मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगते हैं. जी बिल्कुल, इनकम टैक्स और स्टॉक टैक्स या एसेट टैक्स वगैरह जो होगा आपका. अच्छा, बेसिकली मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है. उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, ईटोरो.
अब ईटोरो का ये सीन है कि उनकी ब्रोकरेज फीस नहीं होती। जैसे मैं कोई भी स्टॉक खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, उसकी कोई ब्रोकरेज फीस नहीं होती। और वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो शायद यूके का है। और उस प्लेटफॉर्म पे आप जैसे क्रिप्टो करेंसीज भी ले सकते हैं, और क्या नाम है, नेस्डेक के भी स्टॉक होते हैं, उसके बाद जापान के भी होते हैं, चाइना के भी होते हैं। तो मेरा जो फोकस होता है, मैं करता हूँ नेस्डेक के स्टॉक के ऊपर, जिसके इंडेक्सेस होते हैं सारे, डॉ जोन्स के होते हैं, और क्या नाम है अपना S&P 500, इनकी मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। और इसके ऊपर इतना कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ वही जो स्टॉक खरीदता बेचता हूँ। बदले में ये होता है जैसे कि अगर मुझे अपने जो स्टॉक ट्रेडिंग का अकाउंट है उसके ऊपर से मुझे जैसे $1000 निकालने हैं, तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर ट्रांजेक्शन पे मेरे $5 कटते हैं सिर्फ। और पाकिस्तान में जब था तो $25 कटते थे। Right, was thanks a lot, and thank you both of you. काफी अच्छा सेशन था, and I love that you guys could make time for the session today. Over to you, Atik. Yeah, I'm really thank you for both of you coming, Dr. Wakas and Wahaj, for coming at this interview. I think that's it. Let's wrap up the event, and thank you both of you for coming. Allah Hafiz. Yeah, thank you for the opportunity to share. Thank you. Thanks. Okay.